ബീഹാറിൽ എൻഡിഎക്ക് 4-3 ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സഞ്ജയ് ജയ്സ്വാൾ. മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനെ വിമർശിക്കുന്ന തേജസ്വി യാദവ് ആർജെഡി ഭരണകാലത്തെ ബീഹാറിന്റെ അവസ്ഥ മറക്കരുതെന്നും സഞ്ജയ് ജയ്സ്വാൾ ജനം ടിവിയോട് പറഞ്ഞു. ബീഹാറിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സഞ്ജയ് ജയ്സ്വാൾ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. नमस्ते जी. पूरे बिहार में बीजेपी का और एनडीए का लहर कैसा चल रहा है? हम 3/4 से 3/4 से ज्यादा सीटों पे जीतेंगे और लास्ट 15 इयर्स में जो काम एनडीए गवर्नमेंट ने किया है और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश में कार्य किया है, उसके बदौलत हम 3/4 मेजॉरिटी लेंगे. In Lok Sabha election, BJP won 39 seats out of 40. Do you think that it will happen again and NDA will won more than seats in Vidhan Sabha election? Oh, not that kind of result because that election was fought for Pradhan Mantri Narendra Bhai Modi ji. इसलिए वो रिजल्ट तो संभव नहीं है उतना, बट 3/4 मेजॉरिटी हमें मिलेगी, इस पर कोई डाउट भी नहीं है. तेजस्वी यादव और आरजेडी टारगेटिंग सीएम नीतीश कुमार जी, वो तो विकास की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं. हाउ विल यू एनडीए डिफेंड दैट? सभी को अपना पास रिकॉर्ड देखना पड़ता है. तेजस्वी यादव की जब पार्टी 15 इयर्स रूल कर रही थी तो जितने भी यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट से छोड़ के भाग गए, जितने भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सोचा जा सकता था वो सब छोड़ के भाग गए. तेजस्वी यादव खुद 12 डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर थे आज से 3.5 इयर्स पहले नीतीश जी के साथ. उन्होंने एक को जॉब नहीं दिया, एक पॉजिटिव काम नहीं किया और बिहार को इस तरह से वो ले जा रहे थे कि नीतीश कुमार को 180 सीट की मेजॉरिटी छोड़ करके बीजेपी के साथ एलाई करके 123 की एक वेफर थिन मेजॉरिटी के साथ 4 इयर्स रहना पड़ा, क्योंकि वो बिहार को डेवलपमेंट रोकने का काम कर रहे थे. Well, sir, what is the stand against LJP? They are said they are not with NDA, but we will support BJP. What is BJP's stand? LJP has fought against us in Jharkhand. JDU has fought against us in Manipur. JDU has fought against us in Uttar Pradesh. So, because regional parties have got their own settings, and in Bihar it's very clear that BJP, JDU, HAM, HUM and VIP, these four are into the coalition. There are so many places when we were in Shiv Sena allies, Shiv Sena was fighting on it all India level. But that doesn't matter. In Bihar it's very clear that these four, we are fighting with these four allies. And last first phase election is खत्म हो गया और आने की 2 फेज पर किसी बातों में बीजेपी लोगों के बीच संवाद करता हूँ. बीजेपी का अभी जो सेकंड और थर्ड फेज का जो ये एरिया है, यहाँ पे 2019 इलेक्शंस में हम लोग 3 लाख प्लस वोटों से जीते हैं एवरी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी. So that shows कि second or third phase will be swept by BJP. Thank you. നിതീഷ് കുമാർ സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നവർ മുൻപ് ഉള്ള കാലത്ത് ആർജെഡി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ബീഹാറിലുണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കൂടി പരിശോധിക്കണമെന്നുള്ള വിമർശനമാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സഞ്ജയ് ജയ്സ്വാൾ ഉന്നയിച്ചത്. കൂടാതെ എൻഡിഎക്ക് ഭരണ തുടർച്ചയുണ്ടാകുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കൂടി അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. പട്നയിൽ നിന്ന് ഉണ്ണി കെ വാര്യർക്കൊപ്പം ജിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ, ജനം.